Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the OnePlus Nord CE 5G. तो जैसे आपको पता होगा लास्ट ईयर OnePlus ने एक अफोर्डेबल कैटेगरी में एंटर किया था विद देयर OnePlus Nord, बट दिस ईयर दे हैव आल्सो फॉलोड दिस अप विद अनदर स्ट्रिप डाउन वर्जन व्हिच इज कॉल्ड द OnePlus Nord CE 5G. तो इसका प्राइस है ₹25,000 अप्रोक्सीमेटली एंड ये थोड़े लेस फीचर्स है इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस फोन. अभी इसका जो CE है ये स्टैंड करता है फॉर कोर एडिशन एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेस्ट ओनली द कैमरास ऑफ द OnePlus Nord CE 5G and tell you how they perform. तो ये फोन जो है ये अवेलेबल है दो वेरिएंट्स में इंडिया में. पहला जो है वो है 8GB रैम एंड 128GB कैपेसिटी में और दूसरा जो है वो है 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ में. और इसके प्राइसेस भी जो है वो है 25,000 एंड 28,000 रिस्पेक्टिवली और ये अवेलेबल होते हैं तीन कलर्स में. जो पहला ये ब्लू वॉइड है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड चारकोल इंक एज वेल एंड सिल्वर रे इज अनदर ऑप्शन दैट इज अवेलेबल. सो व्हाट वी आर रिव्यूइंग टुडे हियर इज बेसिकली द ब्लू वॉइड एंड दिस इज द कैपेसिटी व्हिच हैज 12GB रैम एंड 256GB ऑफ स्टोरेज. तो अगर हम लुक, बॉडी और फील के बारे में बात करें तो देयर इन टर्म्स ऑफ डिजाइन मतलब काफी सिमिलैरिटी है विद द OnePlus Nord एंड द CE. जैसा आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब OnePlus Nord लॉन्च हुआ था तो उसका बैग जो था वो एक ग्लास बैग था, बट अभी CE में इन्होंने ये चेंज करके इसे एक प्लास्टिक बैग दिया है एंड इट ऑल्सो हैज सम सॉर्ट ऑफ अ मैट फिनिश. सो दैट मीन्स कि इसमें काफी फिंगरप्रिंट्स मार्क्स भी नहीं आएंगे इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस एडिशन, बट डिजाइन एलिमेंट्स में थोड़े से चेंजेस हैं. एंड जैसे आप सबसे पहले देखेंगे तो ये OnePlus का जो अलर्ट स्लाइडर है ना दैट इज मिसिंग फ्रॉम द CE, व्हिच मींस दैट प्रोबेबली व्हेन दे रिड्यूस दैट कॉस्ट तो उसमें दिस वाज वन ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच दे रिमूव्ड. अभी आई डोंट नो वेदर OnePlus यूजर्स इसे पसंद करेंगे कि नहीं, बिकॉज एक वो अलर्ट स्लाइडर काफी सिनोनिमस है OnePlus के ब्रांड के साथ, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल एंड वेरी इजी फॉर पीपल टू मैन्यूवर विद इन टर्म्स ऑफ UI. अभी दूसरी एक अच्छी बात लेकिन ये है कि जो 3.5mm जैक है इसमें OnePlus Nord CE में वापस आ गया है जो OnePlus Nord में मिसिंग था. तो आप अगर ऐसे यूजर हैं जिनको वायर्ड हेडफोन्स यूज करने की काफी आदत है और आपको वो पसंद आता है इन कंपैरिजन विद द वायरलेस हेडसेट्स, that is going to be a very good bonus for you. But overall in terms of design I really like it. I think it's quite nice, it's simple, it's clean, it's good to operate with one single hand, it's also light. So in that department I think it's pretty decent. तो अगर हम कैमरा स्पेक्स की बात करें तो OnePlus Nord CE जो है ये अभी थोड़ा सा स्ट्रिप डाउन है इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स एज वेल एज कम्पेयर टू द OnePlus Nord. जैसे OnePlus Nord जो था उसमें आपको 4 कैमरा सेटअप या क्वाड कैमरा सेटअप मिलता था. इन कंपैरिजन नाउ द CE comes with only 3 cameras. But there is a bump up in terms of its primary camera. जो OnePlus Nord था that had a 48 megapixel primary camera which now has been bumped up to a 64 megapixel primary camera in the CE. जो second camera जो यहाँ पे है that basically is a 8 megapixel ultra wide camera and then the third camera is the 2 megapixel monochrome camera which is similar in the OnePlus 9 Pro और जो OnePlus 9 में भी आता था. Now in comparison अगर आप Nord के बारे में देखेंगे तो जो Nord था उसमें आपको दो एक्स्ट्रा एडिशनल कैमरास जो मिलते थे वो ये था, that was one 5 megapixel depth camera and then there was also a macro camera. So that was the difference in terms of what we see behind in the CE. Now if we talk about the front camera as well, so there also there has been a little bit of a drop down. जो Nord था उसका 32 megapixel का कैमरा था फ्रंट का और अभी ये इसमें जो है वो एक 16 megapixel कैमरा है. So these are the changes that you will find in terms of the CE as well as the Nord. So now let's dive into the camera performance and in order to test the camera performance जैसे आपको पता है कि there are various parameters that we check in order to check this. Now सबसे पहले इसमें आता है वो है image quality. So overall image quality जो है ये कैमरा की ये काफी decent है, मतलब images were sharp but जो main primary camera है उसमें से we felt that the images came slightly underexposed and the saturation was decent. अभी इसी comparison में अगर हम shots देखेंगे ultra wide angle से so we thought that the images again were slightly underexposed but they were oversaturated although the sharpness was still maintained. अभी अगर जूम इन करके देखें तो व्हाट वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज देयर कि ये कैटेगरी के फोन में आपको ऑप्टिकल इमेज जूम नहीं मिलेगा. एवरीथिंग इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जूम एंड जो 2x पे भी जो हमने पिक्चर खींचे हैं उसमें सैचुरेशन द इमेजेस वर वेल एक्सपोज्ड बट थोड़ी सी वापस ओवर सैचुरेटेड इमेजेस हैं एंड देयर इज डेफिनेटली अ क्लियर लॉस ऑफ डिटेल्स इन द इमेज शार्पनेस. बट मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता ये कैटेगरी के फोन से कि ज्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. द रीजन इज बिकॉज दीज आर नॉट
not really cameras which will give you some great details when it comes to this sort of a performance, especially in zooming in. But there is a very high possibility कि आगे के जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे वो अपडेट्स में इसकी इमेज क्वालिटी इंप्रूव होने के काफी चांसेस हैं. द रीजन इज बिकॉज OnePlus is usually known to ramp up their software updates very fast in order to improve their handsets. Now अगर हम पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड में भी इमेजेस जो है वो काफी डिसेंटली लिट आए हैं. अगेन थोड़ा सा सैचुरेशन वापस ज्यादा है, बट एज यूजुअल मतलब इस वाले फोन में जो अगर हम देखें तो वापस थोड़ा एज डिटेक्शन इज नॉट रियली एज क्रिस्टल स्मूथ एज यू लाइक टू सी in some of the other phones in this category. Now, if we talk about the low light images, I was really blown away by the low light images that I saw. जैसे आप ये image भी देख सकते हैं, तो the image is actually very well lit, and in this case, because of the oversaturation and compensation जो ये phone कर रहा है, उसके वजह से ये images और pleasing to the eye हो गए and they look really beautiful, especially as a nightscape. Now, if you talk about the front camera as well, so front camera is quite decent. It is a 16 megapixel camera, जैसे हमने पहले बोला है आपको. So in terms of selfies as well, I would say that it's quite nice अगर आपको use करना है. Again, the edge detection is not something which is up to the mark, but it is not something that I would like to complain about because I'm sure that these are things which will be improved in the software updates to come. तो अगर हम video specs के बारे में बात करें तो ये OnePlus Nord CE जो है ये shoot करता है 4K up to 30 frames per second and Full HD up to 60 frames per second. It can also shoot time lapses at 30 frames per second in both 4K as well as 1080p. But overall performance के बारे में अगर हम बात करें तो जो वीडियो का परफॉर्मेंस था वो I would say is quite decent. I mean 4K plus जो Full HD भी है उसमें इसका जो sharpness था वो decently maintain करके रखता था. It is not something which was overly great, but one thing that we noticed was that there was a slight bluish tinge into the sort of a videos that we were shooting. Especially अगर आप थोड़ा भी zoom in करेंगे तो definitely there was a little bit of loss of detail as well. और वो ब्लूइश टिंज जो है वो थोड़ी सी बढ़ती जाती थी. नाउ मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो आएंगे शायद उसमें इंप्रूव हो and we will just have to wait for that. So what do we think about the OnePlus Nord CE 5G, especially जो इसका कैमरा परफॉर्मेंस है उसके बारे में. तो अगर हम कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका कैमरा परफॉर्मेंस एट बेस्ट इज एवरेज. इट इज नॉट समथिंग विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये इमेजेस के डिपार्टमेंट में ये काफी शार्प इमेजेस देगा, बट थोड़े से ओवर सैचुरेटेड होंगे जो मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे. अगर डिटेल्स के बारे में भी बात करें तो ये डिटेल्स भी काफी मेंटेन करके रखता है अनलेस इट विल बी वेरी लो लाइट, और अगर आप बहुत जूम इन करेंगे तो वो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई भी कैटेगरी का फोन आपको वैसे टाइप का परफॉर्मेंस वैसे भी इस डिपार्टमेंट में दे पाएगा. अगर वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो अगेन ये 4K शूट करता है प्लस फुल HD भी शूट करता है और उसमें भी ये काफी डिसेंटली आउटपुट देगा, बट थोड़ा सा हल्का सा ब्लूइश टिंज आता है कभी कभी वीडियो में, स्पेशली जूमिंग इन करने पे. बट इफ यू सी के 25 to 28,000 के जो प्राइस रेंज में है, आपको दूसरे सारे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जिनके वहां से शायद थोड़े से और अफोर्डेबल रेंज में आपको फोन्स मिल सकते हैं. बट फॉर ₹25,000 इन द मिड रेंज, व्हाट यू गेट विद द Nord CE इज अ फोन which is quite nice in terms of design. The display is really good. It's quite fantastic to be very honest, and the software, which is Oxygen, it's quite top notch. So you get overall a pretty balanced handset for the price that you are paying. So do let us know what you think about the OnePlus Nord CE 5G. और अगर आपको चाहिए कि ये फोन हम किसी और फोन के साथ कंपेयर करें तो वो भी हमें कमेंट्स में बताइएगा. एंड एज यूजुअल इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. प्लीज बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी न्यू वीडियो दैट वी डू. Do look us up on Instagram, Facebook, and also our website in the magazine as well, Asian Photography. And until next time, happy viewing.